Hi guys, this is Souramita. Welcome back to my channel. ये मैं विकी कौशल को ड्रॉ कर रही हूँ एंड यू कैन सी आई हैव टेकन 6B पेंसिल एंड मैं इस 6B पेंसिल से पूरा ड्राइंग कंप्लीट करूँगी. पूरा शेडिंग प्रोसेस आई एम गोइंग टू डू दिस यूजिंग द 6B पेंसिल ओनली. आपको पता ही है मैं आर्ट को डिफरेंट वे में एक्सप्लोर करती रहती हूँ. सो दिस इज़ द अनदर वे ऑफ एक्सप्लोरिंग लाइट एंड शेडो यूजिंग ए पर्टिकुलर ग्रेड ऑफ पेंसिल. वेल, अगर आप मुझे पूछे तो मैं और भी पेंसिल यूज़ कर सकती थी, लेकिन मैंने क्यों नहीं लिया. लाइक फॉर इंस्टेंस से 2B पेंसिल. सो इससे मैं डार्कर वैल्यूज़ को नहीं कर सकती. बट इफ़ आई टेक ए डार्कर ग्रेडेड पेंसिल देन विद स्मॉल प्रेशर, with the ample amount of pressure, I can create the lighter values. That's why I have taken this 6B pencil. जिससे मैं ज़्यादा प्रेशर से जो हेयर एरिया है या जो शेडोज़ एरिया है उसको मैं ड्रॉ करूँगी. Here my muse is Vicky Kaushal. Vicky Kaushal in the song Tauba Tauba. Well, you can see that I have already pasted the reference image in the upper left corner of the video, and by observing every tiny details of that image, I am building up every hair structure, every hair strand direction. Well, this is an artistic approach, so I am using a single pencil only, and with that I'll do the complete shading. And right now you can see that with lighter pressure I am drawing the medium toned or the medium to lighter toned areas, and जहाँ पर जो highlights है I'll leave those portions, and in this way I'll completely build up the entire drawing. So in an artistic approach, you just use pencil, a single or multiple pencils to build up the complete light and shadow areas of any particular thing, a face or an object, anything, and you don't blend them while shading. You can blend them after shading the whole thing, but not any intermediate blending step in between the steps. So in this way, by using pencils only, the complete drawing is done. Guys, if you really enjoy watching this video, then like and share it as much as you can, and comment your thoughts on this video, on my art, on this artistic approach of drawing Vicky Kaushal's face, and don't forget to subscribe my channel so that you don't miss any new update. And if you're watching this video in Facebook, then make sure you like my Facebook page, and you can also follow me in Instagram. Link is there in the description. Now watch this video till the end to see the final results.